What's up, guys? This is Preetham from The Pickup Dude, and I'm here to help you to become this man with multiple options. Now, in this video, we are going to talk about how do you not lose your frame in a relationship. So, without any further ado, let's get started. So, a few days ago, क्या सीन था? I was just traveling in a bus, and मेरी जो पहली वाली बस थी, it got cancelled. And जो lower first वाला था मेरा नंबर, and they cancelled and gave me another bus, and वहाँ पे upper 7 मिला मेरे को. लाइक ठीक है, क्या ही फर्क पड़ रहा है. आई डिडंट न्यू दैट दिस, ये क्या ही फर्क पड़ने वाला है, इज गोइंग टू कॉस्ट मी. बहुत फर्क पड़ने वाला था. सो मेरे बाजू में देयर वाज डबल सीट, राइट? आई वाज अ सिंगल सीट. सो डबल सीट उस साइड देयर वाज अ कपल था, उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था. ठीक है. सो इनिशियल द मोमेंट आई केम इन, कुछ नहीं था. आई जस्ट पुट माई ईयरफोन्स एंड ऐसे ही मैं बाहर देख रहा था. आई हर्ड समवन लाइक आर्ग्यूइंग. तो ठीक है, चलो, कपल के बीच में आर्ग्यूमेंट होते रहता है. तो दे वर सेइंग समथिंग, ठीक है, जो भी है, ठीक है, राइट. इतना मैंने ध्यान नहीं दिया. देन आई थिंक एन आवर पास्ट, जस्ट लिस्टेड, आई रिमूव्ड माय ईयरफोन्स एंड सॉ लाइक दे वर स्टिल आर्ग्यूइंग. So the argument was basically like the guy was more or less like, you don't respect me, I need more respect from you. And the girl was more of like, you don't understand my emotions, you don't sit and talk with me, you're not emotionally available for me. तो ये वाले उनके चल रहे थे. सो रात के 12-1 बजे तक ये चला. फिर सुबह के 3 बजे भी वो बच्चा फिर रो रहा था, थोड़ा इधर उधर किया. देन अराउंड 7 मेरी नींद खुली. मैन, दे वर स्टिल आर्ग्यूइंग, एंड गेस व्हाट, दिस टाइम देयर वॉल्यूम वाज इतना सा नहीं था भाई, इतना था. द होल बस कुड फकिंग लाइक हियर देयर आर्ग्यूमेंट्स एंड इट बिकेम अगली. ठीक है. एट वन पॉइंट इन टाइम दे वर स्ट्रेट अप स्वेयरिंग एट ईच अदर. मेरे को भाई ट्रॉमा आ गया. एंड आफ्टर अ पॉइंट द गाय वांटेड, रहता ना बंदे, तो दे वांटेड समथिंग फ्रॉम दैट गर्ल, एंड दैट गर्ल स्ट्रेट अप वाज लाइक, नो, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डॉग आर यू कि तुम होटल जाने तक रुक भी नहीं सकते. मैन, लाइक दैट हर्ट मी. मेरे को ऐसे ट्रॉमा आ गया भाई, ये क्या चल रहा है. लाइक माय होल फकिंग लाइफ फ्लैश इन फ्रंट ऑफ माय आईज. लाइक, इज दिस हाउ गेटिंग मैरिड इज? लाइक व्हाट द फक. लाइक मतलब, is this how majority of the couples go through? Because वो communication gap है. ये सब हो रहा था. man, like that guy got pissed and he just hit her, slap, and this time the girl also hit him back. It was messy, man. It was fucking messy. So ये जो story whatever I told you, what ये इस moment, so ये इस point तक आया ही कैसे? And straight up at the end they were like, hey, we are going to get divorced. Like, सूनर और लेटर, ये हमारे घर वालों को भी पता है, सूनर और लेटर वी आर गोइंग टू गेट डिवोर्स्ड एनीवेज. सो लेट्स डू इट सूनर देन लेटर, राइट? ये बच्चा भी छोटा है तो मैं देख लूंगी अपना. है ना, दिस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन थी तो इसको यही लाइक व्हाटएवर. सो अगेन माय होल पॉइंट इज, हाउ डज द रिलेशनशिप गेट अंटिल हियर कि जहाँ पे men lose their frame and the girl stops respecting him. So I know it's a channel about where I teach men how to become this man with multiple options. But hey, let's take a contrarian point of view. So I want to actually take sides with the girl. So पहली चीज़ ये यहाँ तक पहुँचता कैसा है? So where is this moment कि a girl stops respecting you? First thing, if you don't understand her emotions, what she wants. So ये चीज़, that's why I always encourage men कि man, you need to have experiences. तुम्हें अगर experiences नहीं है, तुम कूदे जा रहे हो and your head is logical. The guy, all he was saying was, why don't you respect me? Why don't you understand what I want? Why do you behave like this, which makes me pissed off? Logical cheese, right? Don't do like this, I won't be like this. But he doesn't understand कि previous experiences अगर if he had, you'll realize, man, this dating thing is very difficult. Like it's being in a relationship. चलो honeymoon phase में चलो सब सही हो जाता है. बाद में एक point in time, you need to know what's going on. कि ऐसी चीज़ें, relationships don't get built by accident. The healthy relationships don't get built just by accident. You need to work on them. On top of that, like I said, I'm going to take the side of the girl in this situation. So man, she, देखो, first of all, in any marriages, she is the one who's going away from her household and leaving with some man, right? So at that point, if she's sacrificing that much, on top of that, she'll have the baby. 9 months she's going to suffer. On top of that, वो baby हो गया तो ऐसे नहीं, तो she needs to take care of him. So at that point in time, she expects कि चलो, if I am doing this much, at least तुम्हारा इतना तो बनता है कि you understand my emotions, right? तो
whatever she reacted, the ये respect वाला चीज, whatever, that's the default natural क्या बोलता है reaction of a woman. तो वो if a guy gets क्या बोलते हैं angry and he doesn't know what is going through या फिर how to handle the situations, they'll naturally stop क्या बोलता है respecting that guy. And again, the biggest power of a girl, power of pussy, right? तो झक मार के बंदा आएगा फिर, भाई तू मेरी वाइफ है, आई नीड सेक्स फ्रॉम यू, गेस व्हाट, उस मोमेंट पे बंदी बोलेगी अब आया बेटा तू रुक, मैं तेरे को नहीं, आई वोंट गिव यू. फिर दैट बैक एंड फोर्थ, ही विल गेट एंग्री अगेन वो फिर कुत्ते जैसा आएगा. सो दिस इज व्हाट मेक्स द गाय लूज फ्रेम इन अ रिलेशनशिप. तो हाउ डू यू, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस? चलो हमने ये सब स्टेट कर दिया. सो द सॉल्यूशन टू दिस इज you need to have experiences. If you don't have experiences, you won't know shit. ये चीज़ें तुमको करने से ही आती है. You will make 100 mistakes in your relationships. ये पहला दूसरा जो भी रहता तुम्हारा, तो वहाँ पे तुमको समझ आएगा कि यार ये things are very different. And relationship में तो चलो like you both are like you know you want to be there together and वो sexual bond रहता है. But and वो हार्मोन्स तुम्हारे हाई रहते हैं बिकॉज यू आर अ टीनेजर या फिर योर अर्ली 20s. बट व्हाट अबाउट योर लेट 20s एंड अर्ली 30s? वहाँ पे तुम्हारा सेक्स ड्राइव कम हो जाता है. देन हाउ डू यू इवन व्हाट्स द बॉन्ड देयर? तो फॉर दैट आई रियली encourage you to go out there and have n number of women. I am the guy who become this man with multiple options, because how are you going to learn? Be that man for your own wife. ठीक है, there are going to be some girls, they'll be like, you broke my heart and all. Cool, ठीक है. But for the greater good of the society, this is what, because if you know what you're doing, you will have a healthy household. You will be a man who is in control. You're the one who's driving the car. You're the masculine man. And she's just the feminine woman. So if she feels that you are not that capable of riding, she'll sit in your seat and start driving the relationship. And वो उसका जॉब नहीं है. She'll go and just crash somewhere and then she'll blame you कि तूने मेरे को इस पोजीशन में डाला. Even if it crashed, hey, it was your fault. If you don't want to be in this situation, I highly encourage you, hey, become this man with multiple options. Even if it feels like society तुमको बोलती है, even if like people around you are like, hey, चार बंदियाँ घुमाता है, fuck you. In 10 years, in 5 years, 10 years down the line, your life will be completely different. And when they are suffering, उस time पे they'll understand. Gosh, even I would have become this man with multiple options. If you do like this video, please do give it a thumbs up. Also, there should be a link in the description for our school community. We just completed 100+ members in our group. I would love to have you in our community. Again, thanks for watching. My name is Preetham and I will see you in the next show.